हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस बेड वेटिंग इन गर्ल्स, जिसको वी कॉल एज नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। प्लीज रिमेंबर दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली मोर कॉमन इन बॉयज। ये बॉयज में बहुत ज्यादा कॉमन रहता है, नॉट सो मच इन पीडियाट्रिक गायनेकोलॉजी। ऑलराइट, प्रीडोमिनेंटली बेड वेटिंग में, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस में वी वांट टू डिवाइड इट इनटू टू टाइप्स। एक है प्राइमरी, जिसमें द गर्ल हैज नेवर बीन कॉन्टिनेंट। ये एक्चुअली 5 इयर्स के एज के आसपास से हमको देखने को मिलता है। एंड द सेकंड इज सेकेंडरी, जिसमें somebody हैज बीन कॉन्टिनेंट, मतलब लोगों को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम नहीं होता था, बहुत रिसेंटली 1 मंथ 2 मंथ से दे हैव स्टार्टेड डूइंग बेड वेटिंग। नाउ दैट इज 90% ऑफ द केसेस एंड दिस इज 10% ऑफ द केसेस। ओके, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस प्रैक्टिकली एक ही चीज है, मतलब पेशेंट पासिस यूरिन एट नाइट, ओके, नाइट यूरिन विदाउट अवेयरनेस। ऑल राइट, उनको पता नहीं चलता है, जस्ट बिफोर दे कम टू नो द यूरिन हैज ऑलरेडी पास्ड आउट। इस चीज को लेके देयर हैव बीन प्लेंटी ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन, बट नो कॉन्क्रीट मैकेनिज्म। ऐसा कोई कॉन्क्रीट मैकेनिज्म नहीं है जिससे यू कैन कम टू नो व्हाई समबडी हैज नाइट एन्यूरेसिस, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। बट जब हम सेकेंडरी कॉजेस को देखते हैं, प्रीडोमिनेंटली इफ यू लुक, जो कॉमनली हमें रूल आउट करना चाहिए, दैट इज इन्फेक्शन इन यंग गर्ल्स, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज यूरिन इन्फेक्शन। Second, always rule out in such type of girls any trauma. Okay, this trauma can cause a temporary secondary bedwetting. That is something which is very, very important. Okay, the third cause which I am writing is not very common, rare is something called as intoxication. Intoxication मतलब गलती से कोई दवाई का overdose, गलती से कुछ ले लिया होगा, but that is very, very uncommon in our country. In fact, the most common is urine infection. Okay, उसके ऊपर you also find a lot of places जहाँ पे कोई causes नहीं है, जिसको हम बोलते हैं idiopathic nocturnal enuresis. That is also very common. Okay, this is diagnosed on clinical history. आपको parents ही आके बताएंगे. Commonest complaint is complaint of the parents, which tells you that, you know, my girl has been बेड वेटिंग ओवर द लास्ट 2 months, पिछले 2 महीने से रात को पता नहीं चलता है, यूरिन पास हो जाता है। प्लीज टेक अ गुड डिटेल्ड हिस्ट्री। ऑल राइट, इन दिस सिचुएशन टेक द गर्ल इनटू कॉन्फिडेंस एंड स्पीक अबाउट एवरीथिंग। कौन से स्कूल में है, कौन से स्टैंडर्ड में है, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एस्पेशली। ऑल राइट, most of the times there will be no such history which is available. Okay, so what should we remember in such type of situations? It's very important to do a very good counseling. That is point number 1. Second, it's very important to do training. Means you must develop this type of a system jahan pe you tell that child that okay, before you go off to sleep, pass urine 2-3 times and go off to sleep. And this is a very practical advice which we give because we treat a lot of patients of nocturnal enuresis. Parents को हम बोल के रखते हैं कि रात को अलार्म रखो. You know, let's say the child sleeps from 10 o'clock in the night to 8 o'clock in the morning. I'm just giving an example. Then keep an alarm at 2 o'clock. Wake that child up, ask the child to go and pass urine. Understanding? If the child goes and passes urine, if the bladder has become full or urine pass हो गया तो bedwetting नहीं होगा. You must do this for the first 1 to 2 months in idiopathic cases. मतलब in all these cases you should do the training. Idiopathic cases में यूरिन इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा आर कंप्लीटली ट्रीटेबल, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। एंड यू मस्ट ऑल्सो डू ट्रेनिंग अलॉन्ग विथ मेडिकल मैनेजमेंट। अगर आप मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे तो 2 वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स इन दिस एंटायर थिंग. वन इज डेस्मोप्रेसिन, which is commonly available as minirin. Okay, and you have any form of anti-anxiety medication. All right, so always for young girls, no, anti-anxiety medication should be given with the help of a psychiatrist so that you can adjust the dose. That is very, very important. Now remember, when you give minirin, it is an oral tablet. All right, it's available as a nasal spray, but not in India very frequently. It is an oral tablet which you give to the patient. It's a simple 1 mg or a 2 mg tablet which is available. But remember, the effect of minirin is only going to work till you take minirin. अगर आपको प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस है ना, if you have primary nocturnal enuresis, then till you continue desmopressin, effect will be there. Once you stop desmopressin, the effect will go away.
The same thing happens with anti-anxiety medications. Till you continue, effect will be there. Once you stop, effect goes away. Alright. Usually what we have seen is this problem normally is very commonly seen in the age group of 9 to 14 years. Girls between the age group of 9 to 14 years. Alright. Now there are certain rare cases which you should keep in mind in such situation. Always evaluate for hormones if it is a persistent problem. Okay, you must do this. If the problem is a persistent problem, always evaluate for hormones. Show a specialist. Alright, there is no surgery which works. इस पे कोई surgery काम नहीं करती. इस पे कोई great latest technology नहीं है. This is to be managed as a chronic thing. We have seen in our experience that most of the times this usually settles down when the child is around 15-16 years. Don't know how, okay, but it normally settles down. Okay, nocturnal enuresis is very disturbing socially, so please manage it nicely for your patients. Any further questions you have, you can post them. We'll be very happy to answer on this topic. Thank you so much.